Good morning, students. In DSC 203, as you know, we are going through poems these days. Today, I'm just explaining one poem to you, that is Forward March, which is written by Shri Shri, and the name of the poet is Sri Rangam Srinivasa Rao. He is known as Shri Shri. He is a famous Telugu poet as well as a lyricist. He was born in 1910 in Vishakhapatnam, and he is a modern poet who wrote about contemporary issues. He didn't write about ancient people. He didn't write about kings and queens and gods and goddesses. He wrote about contemporary people as well as their thoughts. And he wrote about downtrodden also, जिन लोगों के बारे में कोई भी नहीं लिखता था. So this very poem Forward March, as the name is indicating, ये कुछ progress से related poem है. as मैं आपको ये बता रही हूँ, the name itself is indicating आगे बढ़ना है. किससे आगे बढ़ना है इन्होंने वो बताया है. It was originally written in Telugu, fine, and was entitled as Mahaprasthanam, which means like great departure. It dealt with the final or the last journey of पांडवास के साथ ये डील करती है ओरिजिनल वर्जन में. लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी थी पांडवास की, जो उनकी जर्नी ऑफ स्पिरिट थी पांडवास की, उसको मॉडिफाई करके इस पोइम में बताया गया है. वी आर बीइंग टोल्ड कि क्रांति या रिवोल्यूशन कैसे आता है, बदलाव कैसे आते हैं. So here we are referred to French Revolution also. We are told about how can we change the things, or how can we move ahead, how can we make things better, and how can we move on the way of progress. अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. उन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है. लैंग्वेज ऑफ द पोइम इज़ वेरी वेरी इजी. सिंगल रीडिंग पे ये पोइम तैयार होने वाली है. तो अकॉर्डिंगली आपने इसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट will have to prepare. As I've told you, books are available in the market, तो बुक्स आप मार्केट से खरीदेंगे. अदरवाइज हम लोगों के जितने भी एफर्ट्स हैं दे विल बी यूजलेस. कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे एफर्ट्स डालने का, विच आई हैव बीन डेली पुटिंग फॉर यू. सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. The waves are rolling, the bells are tolling, means the waves of the sea, they are rolling, they are moving, they are rising, they are surging, and bells are tolling, means bells are ringing. Just imagine, इसको आप बिल्कुल अपने imagination के साथ अगर poem को पढ़ोगे तो it won't be tough for you to understand the concept of the poem. कि एक revolution होने वाला है और revolution is about to take place, and waves are rolling, waves are motivating us to move ahead, then bells are ringing, they are also motivating us to move ahead. The voice of the another world is calling, a different world is calling us. That is the world which we are expecting after revolution. कि revolution के बाद जो नई दुनिया की हम इंतज़ार कर रहे हैं, that very world is calling us. It is rolling, tolling, calling on forward march. So we need to move forward. Forward march is waiting for us because the voices of the another world are rolling, they are calling, and they are tolling, means they are ringing, they are calling, they are inviting us to be with them. जो वेव्स हैं वो हमें बुला रही हैं. ईच एंड एवरीथिंग इज कॉलिंग अस फॉर टू बी अलर्ट फॉर फॉरवर्ड मार्च एंड ऑन द फॉरवर्ड फोर्ज. दे वॉन्ट अस टू मूव अहेड with a positive bent of mind, because bent of mind is very very important. Ahead, let us always search, let us always move like wave. वेव कभी वापस नहीं आती है, ठीक है ना. वी हैव टू, जो सागर के अंदर वाली लहरें हैं ना, वो दे कीप ऑन मूविंग अहेड. सो वी आर एक्सपेक्टेड टू मूव अहेड like a wave. We reel and we toil. At times we stumble, we fell down. At times we need to work very very hard with a song in our soul. Our soul should be very very positive. The soul of victory should, your song of victory needs to should be in our soul. Only then we will be able to move ahead. अगर हम negative thoughts के साथ आगे जाएंगे, our soul won't be able to take us ahead, because doubts होंगे, clarity नहीं होगी, negative thought होगा कि काम नहीं होने वाला है. So what do we need to do? We need to, even if we are stumbling, even if we have trouble, we have to move, we must move ahead with positive thoughts. Our soul needs to be fed positively with positive thoughts. Our galloping heart shall reach the goal. Gallop is the movement of the horse.
जो घोड़े की टाप की आवाज़ होती है ना, जो मूवमेंट ऑफ द हॉर्स है, दैट इज कॉल्ड गैलप. सो गैलपिंग हार्ट शैल रीच द गोल. द our heartbeat, our heart keeps on beating, that very heartbeat is compared with galloping, which wants to reach the goal. It shall reach the goal. It will achieve its goal. The choice is clear. When these things are clear, we know where to go, how to go, when to move ahead, and each and everything is clear to us. What is the result? The choice is clear. Obviously our choice is very, very clear. The hour is near. That very moment has come when we have to move ahead. The voice of the another world is there. The voice of the another world is calling. Another world, the world after revolution, or the world where we want to go, वो दुनिया जहाँ हम जाना चाहते हैं, that very voice is very clear, that is calling us, and we need to move ahead with a very positive bent of mind. Thrilled by the call, we are excited. Thrilled means excited by the call of the next world. We are attracted towards the call of the waterfall. Some natural descriptions are there. And of another world we march onward. There is a call of the waterfall. As I am moving continuously, you need to move continuously. I belong to the other world, so you have to come to me. So call of the waterfall is also what is it doing? It is motivating us to move ahead, and that is the call of the another world, which is waiting, which is calling us. Our blood in flood, we are fully excited. Our blood, it is filled with energy. It is in flood. Shall drench all roads. It will drench होता है गीला करना. Our blood will drench all roads. क्योंकि जब रिवोल्यूशन होता है, क्रांति होती है, bloodshed होता है, he is referring to even if a bloodshed takes place during revolution, we have some dreams. In order to fulfill those dreams, if we want to move ahead, अगर वो क्रांति समाज में लाना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को हम छोड़ना चाहते हैं, we want to move ahead with new hopes, new aspirations and new desires, and we want to change the structure of this old, orthodox structure of society. What do we need? We need to sacrifice. वो sacrifices life के भी हो सकते हैं, हमारे selfish interest के भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं. So we leap and we leap the deep. We take deep leap, गहरा जो छलांग है वो, and sweep on the shores, and we'll clean all the shores. Shores will be clean. क्योंकि क्या करेंगे? We have to move ahead with positive bent of mind. Reshaping geography again. We'll reshape the geography of entire society with full zeal, full energy, optimistic attitude के साथ. What will we do? We'll reshape each and everything, including geography, remaking history again, and we'll recreate history. We won't move with the history which is of for ages, which has been lying with us. We need to recreate history. हम आज जो काम करेंगे, जो हमारे आज के कर्म होंगे, जो positive deeds होंगी, tomorrow they'll be history. Very simple. So what do we need to do today? We need to move ahead with positive bent of mind. We need to struggle. We need to come forward with with a bent of mind to reshape geography, and only then we will be able to recreate history, which is going to be proved as a revolutionary step. एक revolutionary step जो है वो prove होने वाला है. Nor deserts, nor forests, nor hills, nor rivers, our forward march shall halt or reverse. Even if deserts are there, Registan, where a lot of sand is there, even if forests are there, hills are there, rivers are there, nothing can stop us. Nothing is going to stop us. Our forward march shall halt or reverse. All these hurdles or problems, they cannot reverse our forward march. We'll move ahead with positive bent of mind to change or reform or transform this society, so that history can be changed or reshaped. East and west and north and south, we'll move in all the directions. We'll change each and everything belonging to different directions. Only then we'll be able to change our history, which is obsolete, which is orthodox, which has old values, which need to be changed with the passage of time. Eagles and lions and hounds of youth. Youth is compared with eagle. Eagle, when it sees from upward, जब वो स्काई से देखता है ना, विजन बहुत वास्ट रहता है.
बिग एरिया को वो कवर करता है. देन लायन, यू नो लायन इज़ वेरी फोर्सफुल, फियर्स एनिमल, फुल ऑफ zeal, फुल ऑफ vigor, फुल ऑफ एनर्जी. एंड hounds of youth, hound mean hunting dog who knows when where how to hunt. बहुत एक्टिव फुर्तीला जो डॉग होता है, दे आर कॉल्ड हंटिंग डॉग्स. दे अटैक द टर्रेट्स ऑफ humbug and hawks. Humbug and hawks is referred to fraud. Our youngsters, they are compared with very active eagles, lions and hounds, which are known for their hunting traits. And attack the turrets. वो किसको अटैक करेंगे? They'll attack the towers, लॉन्ग इरेक्टेड टॉवर्स, बड़े बड़े जो मिनारेट्स बने हैं, बड़े बड़े जो टॉवर्स बने हैं, किन चीज़ों के? दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉड. जो गलत चीज़ें हैं, उनकी बड़ी बड़ी मीनारें बनाई हैं हमने, दीवारें बनाई हैं अपने चारों तरफ, वो क्या है? जो हमारी बहुत सी कई चीज़ें हैं विच आर ऑफ नो यूज़, विच हैव बिकम ऑब्सोलेट. वो सोच, वो विचार, वो कर्म जो हमारे ऑब्सोलेट हो चुके हैं, विच आर ऑफ नो यूज़, एक पर्टिकुलर तरह का लाइफ स्टाइल. सो वॉट द यंग जनरेशन शुड डू, दे शुड ब्रेक ऑल दीज थिंग्स. और इसके लिए दे हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड active. So the conservative, the orthodox. Conservative means which confines us, and orthodox, as you know, conservative and orthodox are used as synonyms. तो जो old values हैं which are of no use today shall go to the wall. When young generation is powerful, young generation is very active, young generation is very alert, they know what is good for our society, what is not good for our society, so they bring revolution. तो young generation लाता है with their thoughts and all that. तो वो जो revolution आएगा वो क्या करेगा? It will attack the ओल्ड वैल्यूज़ एंड बिलीव्स विच हैव बिकम ऑब्सोलेट. इसको ध्यान से देखना कि वो हर चीज़ को अटैक नहीं करेगा रिवोल्यूशन. वो किन चीज़ों को अटैक करेगा? विच आर ऑफ नो यूज़, जो आज बेकार हो चुकी हैं, जिनकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. जैसे कुछ सुपरस्टिशंस हैं जिनको हम इन जनरल जो है लेके चलते हैं, और जो हमारी कंजर्वेटिव थाट है, जो हमारी संकुचित विचारधारा है, उसके लिए इसको रेफर किया गया है. द कंजर्वेटिव, द ऑर्थोडॉक्स शैल गो टू द वॉल एंड शैल कम टू द डॉक. कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग और वैल्यूज़ विच आर स्टिल एनस्लेविंग अस, जिन्होंने आज भी हमें एनस्लेव करके रखा है, दे विल गो टू द वॉल मीन्स दे विल कम टू एंड shall come to the dock. They'll be tried in the court. Come to the dock means tried in the court. And rotten marrowed people with rotten marrow whose thinking is obsolete, पुरानी हो चुकी है, गली सड़ी जो thinking है वो लोग. Senile time harrowed people who have, senile is weak because of old age, who have become weak because of old age. And what they are doing, दे आर नॉट एबल टू मूव अहेड मीन्स वो थाट्स, वो विचार जो हमारी सोसाइटी में यूजलेस हैं, वी नीड टू चेंज देम. एंड ओनली यंग जनरेशन कैन डू दिस विद देयर पॉजिटिव वेंट ऑफ माइंड. दे शुड स्ट्रगल, दे शुड प्रूव दैट व्हाटसोएवर दे आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी. सो हैगर्ड लैगर्ड शैल डाई ऑन द स्पॉट. हैगर्ड मीन्स वॉर्न आउट. हैगर्ड लैगर्ड इकट्ठा यूज होगा, जैसे कि आपका एक वर्ड जो conservative or orthodox was used, it is used together. Haggard, laggard means fatigued and worn out, which is of no use, which is tired, which is totally useless now. And short by short. So what is he saying? That people who have become very old, living with old beliefs and values, which are like hurdles for our young generation, we need to change them. There are people who have very old thinking, they are living with that very thinking, that very thinking should die on the spot. वो चीज़ जो है अब ख़त्म हो जानी चाहिए, because if it won't die then we'll die with that very thinking. हम उस पुराने सोच के साथ कितना संघर्ष करेंगे. So our young generation should come forward. They need to move forward with a positive bent of mind for the establishment of new values, new culture, new tradition, whatsoever is good for the real growth of our society. And short by short, the freedom zealots, and slowly and steadily what is happening, the people who want zeal, freedom zealots means who are filled with zeal for freedom. There are people who want to move ahead with a zeal for freedom. They should move ahead.
उनको आगे आना ही आना है। प्राउड हेयर्स ऑफ टुमारोज थॉट, हेयर्स होता है जो हमारे सक्सेसर्स होते हैं, जो हमारे उत्तराधिकारी होते हैं। पीपल हु आर who have a zeal for freedom, they are the proud heirs, they are our successors who know how to carry tomorrow's thought, how to make our tomorrow better. Their drizzling blood dazzling red hot, their blood is drizzling, जो आपका ये रेपिटेशन है, लाइन में बार बार वर्ड आ रहा है। द ड्रिजलिंग ब्लड डार्जलिंग रेड हॉट, देयर ब्लड इज़ लाइक ऊजिंग, वो बाहर आ रहा है क्रांति के लिए। एंड इट इज़ डार्जलिंग रेड हॉट, हम बोलते हैं ना गर्म खून, इट इज़ अ सेइंग इन हिंदी। सो दैट वेरी ब्लड इज़ हॉट विद अ zeal to do something better. That very blood is it is just बॉइलिंग इनसाइड टू कम आउट, वो ब्लड जो है बाहर आना चाहता है, वो अपने एनर्जी को वो दिखाना चाहता है। विद शाउट्स ऑफ ओम हरि ओम, ओम हरि ओम इज़ अ प्रेयर टू लॉर्ड शिवा। एंड विद दिस वेरी थॉट द ब्लड ऑफ द पीपल who are young, who are transformers, who know how to change the world, who have zeal for freedom, it wants to come out, and it doesn't want that, it wants to come out as revolution needs blood, so they are ready to sacrifice their lives for the freedom. And it is red hot, so called garam khoon, they are ready for all revolutions, वो सारी क्रांतियों के लिए तैयार हैं। storm the Bastille, reactions home. Now we are referred to the fall of the Bastille. It was a fortress in Paris which was stormed by French in 1789 में जो है फ्रेंच ने इस पे इन्वेजन किया था, फ्रॉम वेयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। तो पहली बार जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था या फ्रांसीसी क्रांति जो शुरू हुई थी वो 1789 में शुरू हुई थी विद द फॉल ऑफ द बेस्टिल, एक फोर्ट पे जो है कब्जा किया गया था। सो स्टॉर्म द बेस्टिल, रिएक्शंस होम, दे आर रिमाइंडेड हाउ द फॉल ऑफ बेस्टिल टुक प्लेस, हाउ डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे कमेंस हुआ, स्टार्ट हुआ। सो दे आर रेफरिंग टू the French Revolution. They are filled with enthusiasm for revolution, and what do they want? They are modern revolutionaries who should come together. क्योंकि रिवोल्यूशन या क्रांति तभी आती है व्हेन वी आर टुगेदर। इफ़ वी टॉक ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति की बात करें तो सम थिंग्स हैपेंड इरेगुलरली, कहीं क्रांति जल्दी शुरू हो गई थी, कहीं पे लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है। सो दैट्स वाई वी कुडंट पुट फॉरेनर्स इन दैट वेरी पोजीशन कि वो हमारे देश से चले जाएं। सो सेम थिंग हैपेंड इन अ प्लान्ड वे लेटर ऑन। तो अगर कोई क्रांति लानी है, वो डू वी नीड टू डू, हमें कलेक्टिव होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। किनको? सेम बेंट ऑफ माइंड वाले लोगों को। सो एज सर्ज फॉरवर्ड, सर्ज इज वेव, जो लहर का भाव है, दैट इज कॉल्ड सर्ज। सो यू शुड मूव फॉरवर्ड, कन्वर्ज स्काई वर्ड, कम टूगेदर टुवर्ड्स द स्काई। ओशन की वेव और स्काई कन्वर्जन, you have to converge the sky, converge towards the sky. Lo, another world, a grander world, another world, a world after revolution, एक भव्य वर्ल्ड, a grander world is waiting for the revolutionaries. The banner of liberty has unfurled. Unfurling of the flag is like झंडे का लहराना. So the banner of liberty, वेयर वी सीक इक्वल राइट्स, वी सीक हम लोग जो है बराबरी का अधिकार जो चाहते हैं, दैट वेरी बैनर ऑफ लिबर्टी हैज़ बीन अनफोल्ड। वो जो फ्लैग है वो ओपन हो चुका है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी शुड मूव अहेड विद वेरी पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड एंड स्ट्रगल फॉर सर्टन थिंग्स जो ऑब्सोलेट हैं, आउटडेटेड हैं, पुरानी हैं, विच आर नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी, एंड only then we can move ahead and become successful. So this was all for today. I've explained 2 passages for you. This is all sufficient. Introductory भी included था. So what you have to do, you have to purchase books, you have to go through the explanation the way I have been doing for you. So good day.